Hello everyone, welcome back to our channel, and today is 24th of November and one more announcement from ICAI regarding rescheduled examinations of rescheduled examinations for paper number 3 in the state of Tamil Nadu and Puducherry due to the Nivar cyclone. As you know all about Nivar cyclone, so due to this Tamil Nadu government decide for a public holiday, and because of this ICAI is also decided for the safety of a student and protection of health. They decided to reschedule your paper number 3 on which are going to held on 25th of November, but now it's rescheduled for 11th December 2020 at same venue. Timing is also same, 2 p.m. to 5 p.m. and admit card would be remain valid for the rescheduled dates. ऑल राइट एंड बाकी प्लेसेस में सर एग्जामिनेशंस आपके एज पर शेड्यूल ही हैं. सो बाकी स्टेट्स में आपके एग्ज़ाम्स मतलब कल वाले पेपर आपके होंगे रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में, बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्टेट्स तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, सो सबके एग्जामिनेशंस के टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेम है. तो कल आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है. बाकी ये 2 स्टेट में सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है. पोस्टपोन्ड मतलब रीशेड्यूल कह लीजिए हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु या पुडुचेरी का. और बाकी फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून विद आवर पेज, आवर चैनल विल अपडेट यू सून. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.